For days now, Assam's Chief Minister's Congress MP Gaurav Gogoi have engaged in an online spat over the controversial charges levelled against Gogoi's wife, who is a British national. In a fresh twist now, the Assam police has filed an FIR against a Pakistani national and a few others accused of attempting to interfere in India's domestic affairs. And the case allegedly involves Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Colburn, who is now under investigation. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma claims that Colburn has ties to Pakistan's inter-service intelligence and is also under scrutiny for her alleged involvement in the Lok Sabha poll campaigns, despite being a British citizen. The Kaliabor constituency, which Gogoi held from 2014 to 2024, is at the center of these allegations. In response, Gaurav Gogoi has threatened to take legal action against the BJP for defamation, calling the accusations baseless and part of a malicious campaign. Listen in. All of this is done because 12 months from now, there will be elections in Assam. The BJP government have no performance to show. They are unable to fulfill any of their promises, and in order to hide their failures, they are embarking upon a mischievous and malicious, baseless, factless, slanderous campaign, and we will definitely be taking the appropriate action. At the same time, I have full faith in the wisdom of the people of Assam that they can see through this obvious slander campaign. भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास जो है वो भरा पड़ा है। आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाए थे, प्रधानमंत्री जी ने जाकर के नवाज शरीफ की बिरयानी खाई थी, उन्हें बुला करके देश में मेहमान बना करके शपथ ग्रहण में बुलाया था, पठानकोट में बुला करके आईएसआई को कदमताल कराया था, परेड कराया था। ध्रुव सक्सेना से लेकर के न जाने कितने भाजपा के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये नया शिगुफा है जो उछाला गया है असम भाजपा की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले चुनाव में असम की जनता उनके सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने जा रही है, इसलिए मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं।